बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 35वां कराची जिमखाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है और ये टॉस करा रहे हैं एम्पायर रशीद। सिक्का उछाला है और ये फैक्ट डेट टॉस जीतकर पहले बारी ले रहे हैं। आज का ये मैच खेला जा रहा है जो कि इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल है। फैक्ट डेट और उमर टोटल एनर्जी वर्सेस उमर। टोटल एनर्जी टॉस जीत के पहले बारी ले रहे हैं। टोटल एनर्जी फील्डिंग कर रहे हैं टॉस जीत कर। शुक्रिया राशिद। और यहाँ आज के मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं एम्पायर रशीद खान और एम्पायर रेहान उद्दीन। और जबकि हमारे साथ यहाँ थर्ड एम्पायर के प्राइज अंजाम देंगे एहसन बाबर। और हमारे साथ हमेशा की तरह ऑफिशियल स्कोरर पीसीबी के राशिद असलम मौजूद हैं और स्पोर्ट स्ट्रीम के हमारे साथ मौजूद हैं हस्सान, जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं आज कंट्रोलिंग के साथ। हस्सान की तारीफ़ करनी पड़ेगी जिस तरीके से स्पोर्ट स्ट्रीम को कवरेज देते हैं और यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव मैचेस की कवरेज जिस तरीके से कवर करते हैं। इनके कैमरामैन जो यहाँ एफर्ट करते हैं, तारीफ़ करना पड़ेगी। पैंतीसवां कराची जिमखाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है उमर एसोसिएट के ताउन से। आज का मैच टोटल एनर्जी और उमर इंटरप्राइजेस के बीच खेला जा रहा है। टोटल एनर्जी टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया है। और वहाँ बल्लेबाजी की शुरुआत की है उमर इंटरप्राइजेस के सलामी रूप के बल्लेबाज दोनों बाबर मलिक और एजाज़ ख़ान हैं। और जबकि गेंदबाजी की शुरुआत में यूसुफ हबीब हैं, अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे फार एंड की ओर से। उनके लिए फील्डिंग की सजावट करते हुए कप्तान चार खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे। ऑन साइड पे लॉन्ग ऑन लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए और डीप स्क्वायर लेग भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए। मिड ऑन और शॉर्ट लेग ऑफ साइड पे, शॉर्ट थर्ड बैंड, गली पॉइंट
कवर और मिड ऑफ, ये है ऑफ साइड की फील्ड। तो इस तरीके से 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे और 4 ऑन साइड पे। और वहाँ आदिल खान विकेट कीपर गए हैं कुछ गेंदबाज से बातें करने। कुछ समझा रहे हैं गालिबन आदिल खान, जो कि इस टूर्नामेंट में अच्छी धुआंधार बारी ले रहे हैं और पूरे तरीके से फॉर्म में हैं आदिल खान भी। यूसुफ हबीब तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। सेमीफाइनल की पहली गेंद करेंगे बाबर मलिक को, और ये गेंद लेग ब्रेक गेंद मिडिल स्टंप के लाइन में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आती हुई इस गेंद को अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेला है उसे ऑफ ड्राइव करते हुए बैक फुट पर मिड ऑफ की जानिब, और 1 रन बनाया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी तरीके से बाबर मलिक ने खाता खोला अपना भी और टीम का भी। और इस बार अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे, चूके थे, गेंद पैड से लगती हुई गली की जानिब गई, जहां फील्डर ने आके उसे फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए, उम्मीद से पैदा ज़रूर हुई थी गेंदबाज के लिए। इस बार फिर से अच्छी गेंद बैट और पैड साथ मिलाते हुए इज्जत के साथ खेले हैं मिड ऑफ की जानिब, जहां गेंदबाज ने जाके खुद ही फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। एजाज खान सामना करेंगे यूसुफ हबीब का, और इस बार बैकफुट पर गए हैं, पिक किया है उसे, लेग स्टंप पे पड़ी गेंद को अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, पुल कर दिया है उसे डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट यहाँ कहना पड़ेगा एजाज खान का। जो ही गेंद को लेग स्टंप पे थोड़ा सा शॉट गिरते देखा, बैक फुट पर गए, बल्ले के बीचों बीच लिया, पुल कर दिया उसे डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर रेहान का इशारा, 4 रन। एजाज खान फिर से तैयार, गेंद करेंगे यूसुफ हबीब, बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज, बाएं हाथ से राउंड द विकेट ये गेंद। इस बार फिर से थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लेकिन बैक फुट पर जाके कट किया था गली पॉइंट की जानिब, वहाँ फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं इस बार बल्लेबाजों के लिए। एजाज खान सामना करेंगे फिर से यूसुफ हबीब का, और इस बार खेला है, कट कर दिया है, इस बार कामयाब हुए हैं। गेंद डीप गली पॉइंट की तरफ, बिल्कुल कारपेट के सहारे, 4 रनों के लिए। पहले ओवर के इख्तिताम पर 9 रन। उमर इंटरप्राइजेस टॉस हारकर पहले बारी लेते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में कराची जिमखाना के ग्रोइन कारपेट पर खेले जाने वाला ये पहला सेमीफाइनल है 2022 का, जो कि खेला जा रहा है टोटल एनर्जी और उमेर इंटरप्राइजेस के बीच। उमेर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रहे हैं, और अब तक पहले ओवर में 9 रन बटोर चुके हैं बल्लेबाज। 9 रन लगाओ, 9 कोई है ही नहीं भाई, कोई नहीं है हमारे स्कोर में। यार वहाँ कोई है नहीं। 9 रन लगाओ, 9 रन। फोन कर रहे हैं। और यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालेंगे इमरान इदरीस के लिए फील्डिंग की सजावट। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। इमरान इदरीस भी बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। इस बार आर्म बॉल थी, खेला उसे बैक फुट जाके सीधा कवर की जानिब, और यहाँ एक कवर की जानिब से तब तक फील्डर फील्ड करते हिम्मत दिखाई थी बल्लेबाज ने रन दौड़ने की, लेकिन यूं ही झपटते देखा, अपने कदम वापस क्रीज में खींचे और रन लेने की हिम्मत ना दिखा पाए।
इमरान इदरीस बाहिने हाथ से इस बार फिर से अंदर आती हुई इस गेंद को अगले कदम पे घुटना टेकते हुए स्वीप के अंदाज में खेले हैं डीप मिड डाउन की जानिब। तब तक के फील्डर आके उसे फील्ड कर रहे हैं डीप से। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया इन्होंने बल्लेबाजों ने और 1 रन के साथ 10 रन उमर इंटरप्राइजेस टॉस हार कर पहले बारी लेते हुए और यहाँ कहना पड़ेगा टोटल एनर्जी जो कि टॉस जीत कर फील्डिंग कर रही है ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं चेस करने में, क्योंकि उनके पास जो आदिल खान जैसे बल्लेबाज हैं उस बीच ड्राइव किया है कम फ्लाइट के साथ। ये गेंद थी सीधा पॉइंट की जानिब, फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं है। बिल्कुल पैक्ड ऑफ साइड फील्ड है यहाँ, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। इमरान इदरीस बाहिने हाथ के राउंड विकेट गेन करेंगे और इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद थी और इस बार फिर से ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ। इस बार इस डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर रशीद खान का इशारा, 4 रन। खूबसूरत शॉट और कहना पड़ेगा जारहाना शॉट यहाँ एजाज खान का। शुरुआत से ही एजाज खान थोड़े से जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं। अब तक 12 रन बना चुके हैं 7 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से और 171 का स्ट्राइक रेट है एजाज खान का। एजाज खान इस बार फिर से अंदर की तरफ आती हुई इस गेंद को बैक पर चले गए थे, गेंद को खेला है वहाँ गली की जानिब। जल्दी करनी पड़ी थी इस बार बल्लेबाज को, क्योंकि गेंद तेज़ी से अंदर आई थी। लो ट्रेजेक्टरी की गेंद थी, लेकिन क्या खेलने में कामयाब हुए गली की जानिब 1 रन के लिए। और अब इमरान गेंद करेंगे एजाज को और इस बार बाबर मलिक थे ये बल्लेबाज। इसी के साथ दूसरे ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 15 रन और अच्छा किफ़ायती ओवर यहाँ कहना पड़ेगा इमरान इदरीस की जानिब से। अपने पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और बल्लेबाजों को बिल्कुल मोहतात रखा है। वारेन की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारियां फिर से एक बार गालिबन इमरान इदरीस है ना, यूसुफ हबीब क्लब की ओर से गेंदबाजी के लिए तैयार। कप्तान फील्डिंग में सजावट करते हुए और अब 3 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे फिर से पैक फील्ड है। ऑन साइड पे लॉन्ग ऑन लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप मिड विकेट भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए। इस बार लेग स्टंप पे पड़ी इस गेंद को स्वीप के अंदाज में खेले थे। गेंद ने बल्ले का धीपरी किनारा लिया और लॉन्ग लेग की जानिब आती हुई। तब तक के फील्डर फील्ड करते हैं, मौका था बल्लेबाजों के लिए 2 रन का। यूसुफ की अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, पूरी तरीके से चूके। खेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से किस्मत वाले रहे। गेंद गई विकेट कीपर के पास, रन लेने का कोई मौका नहीं। एजाज खान सामना करेंगे यूसुफ हबीब का और इस बार अच्छी गेंद धीरे से खेले हैं। विकेट कीपर ने पीछे आके गैदर किया, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। एजाज खान शुरुआत से ही जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं। अब तक 15 गेंद रन कर चुके हैं, 11 गेंदों का सामना किया है एजाज खान के लिए। अब 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे कर दिए हैं, 5 ऑफ साइड पे इस बार।
ऑफ स्टंप पे पड़ी गेंद को कट किया है सीधा पॉइंट की जानिब। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। एजाज खान फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार इस गेंद को खेलना चाहते थे। फिर से एक लंबा स्ट्रोक खेलने की ज़रूरत महसूस की थी, लेकिन गेंदबाज ने चालाकी से गेंद को, और इस बार देखना पड़ेगा स्वीप किया है फुल टॉस बनाते हुए। डीप मिड विकेट की तरफ बल्लेबाज थे बाबर, और इसी के साथ तीसरे ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर 19 रन बगैर कोई विकेट खोए उमेर इंटरप्राइजेस, और अच्छा किफ़ायती ओवर एक और वहाँ यूसुफ हबीब की जानिब से सिर्फ 4 रन दिए हैं इस ओवर में। यूसुफ हबीब ने 2 ओवर में 13 रन दिए हैं, और जबकि इमरान इदरीस ने 1 ओवर में 6 रन दिए हैं। अब तक के दोनों ही गेंदबाजों ने खासी किफ़ायती गेंदबाजी की है। इमरान इदरीस इस बार तैयार कमेंट्री बॉक्स की ओर से इमरान इदरीस के लिए फील्डिंग की सजावट। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। इस बार अच्छी गेंद, कोई रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए, और एक और डॉट बॉल वहाँ इमरान की जानिब से। इमरान तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज बाबर मलिक को, और इस बार थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, अगले कदम पे आए हैं, उड़ता हुआ शॉट खेल रहा है लेकिन महफूज। तब तक के डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर फील्ड करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। इमरान फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अब लॉन्ग ऑफ के फील्डर को थोड़ा सा ऊपर बुला लिया गया है, और इस बार बैकफुट जाके कट किया है खूबसूरती के साथ। खासी क़ुव्वत वाला शॉट था, लेकिन वहाँ कमाल की फील्डिंग पॉइंट के फील्डर की कहना पड़ेगा। 4 रन ज़रूर बचाए हैं। अगर ये गेंद मिस होती तो शॉट में इतनी क़ुव्वत थी, सीधी बाउंड्री लाइन को जाके छूती। इमरान की अगली गेंद, और इस बार थोड़ी शॉर्ट गेंद, आर्म बॉल थी, खेलना चाहते थे बैकफुट पर। एम्पायर का इशारा, बाई का, क्योंकि विकेट कीपर भी वहाँ चूके थे। 1 रन बाई के रूप में यहाँ उमर इंटरप्राइजेस की झोली में। इमरान गेंद करेंगे बाबर मलिक को, और इस बार लेग स्टंप पे पड़ी इस गेंद को पिक किया है, देखना पड़ेगा खूबसूरती के साथ। जहां मिड ऑन की जानिब, मिड ऑन और मिड विकेट के बीचों बीच फील्डरों के लिए कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एम्पायर रशीद का इशारा। इस बार बाबर मलिक है ये बल्लेबाज जिन्होंने 4 रन की राह दिखाई है। इमरान इदरीस अपनी दूसरे ओवर की आखिरी गेंद कर रहे हैं, बाएं हाथ से रोल द विकेट, और इस बार लंबी हिट करना चाहते थे, लेकिन गेंद गेंद की कहना चाहिए गेंद का जो धीमापन था उससे पूरी तरीके से चूके मिस टाइम शॉट हुआ। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। इसी के साथ चौथे ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। चौथे ओवर के इख्तिताम पर 25 रन। भाई 4 ओवर 25 रन लगाओ, कुछ बोल दिए। उसने 2 ओवर लगाए। क्या करें, कौन सी केबल चल रही है? वही कर रहा है, कौन उधर कर रहा है, लेकिन उधर तो बहुत लंबी केबल हम लगा रहे, तो कर रहा है। यहाँ छोटी वाली केबल लगाओ। आई थिंक ये मैंने बड़ी केबल लगा दी, इससे करना।
35वां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। टोटल एनर्जी और उमर इंटरप्राइजेस के बीच टोटल एनर्जी टॉस हार कर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 4 ओवर में 25 रन बना चुके हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मौजूदा रन औसत 6.25 जो कि सर्किल के हिसाब से खासा कम स्कोर है। सर्किल को संभालना होगा, खेलना होगा। हालांकि अब तक विकेटें नहीं गिरी हैं तो खासी उम्मीद वाली बात है कि अगर लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल करें तो 8 या 7-8 के औसत से सर्किल ख़त्म कर सकते हैं। मौका है और इस बार मिडिल स्टंप से पिक किया था और ये आउट। लंबी लगाना चाहते थे फहद जब्बार थे डीप मिड ऑन पे, जिन्होंने बिल्कुल आसान सा कैच लेके पहला झटका दिया है। यहाँ इमरान एजाज हैं बल्लेबाज आउट होने वाले, जो कि जा रहे हैं ना मूड में पहले ही से नज़र आ रहे थे। लेकिन तारीफ़ करना पड़ेगी गेंदबाजों की, पूरी तरीके से बैकफुट पर रखा हुआ था बल्लेबाजों को और उसी जिद्दोजहद में एजाज खान आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं। एजाज खान ने 16 रन किए, 16 गेंदों का सामना किया और 3 चौके लगाए और 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। लेकिन कहना पड़ेगा अपने बल्लेबाजों को एक मुश्किलात में छोड़ते हुए आ रहे हैं एजाज खान। अब देखना पड़ेगा कौन सा बल्लेबाज है जो इस मुश्किल हालात में आके बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को संभाला देता है, क्योंकि नए जाने वाले बल्लेबाज अली इकबाल। शुरुआत में तारीफ़ करना पड़ेगी टोटल एनर्जी के गेंदबाजों की, जो कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था उसका मान रखते हुए गेंदबाज पूरी तरीके से किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजों को खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे, शुरुआत से ही खेल अपने काबू में रखा हुआ है टोटल एनर्जी के गेंदबाजों ने। यूसुफ हबीब जो कि 2.1 ओवर में अब तक 13 रन देके 1 विकेट चटका चुके हैं, 6.0 की इकनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं। इमरान इदरीस दूसरे एंड से 2 ओवर 11 रन। दोनों ही गेंदबाज सर्किल में खासी किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार उठता हुआ शॉट है, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। आते ही कहना पड़ेगा अली इकबाल ने अपने अगले कदम का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया। जो ही गेंद को फ्लाइटेड गिरते देखा, अगले कदम पे आए, खेल दिया उसे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से। फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, सिर्फ देखते ही रहे थे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा हिम्मत वाला शॉट आते ही पहली गेंद पे 4 रन का रास्ता दिखाया है यूसुफ हबीब को। इस बार इज्जत बख्शी यूसुफ हबीब को और आउट। ये गेंद अंदर की तरफ आती हुई आर्म बॉल थी, इसको खेलना चाहते थे इज्जत के साथ। पहला शॉट तो उन्होंने आते ही 4 रन दिखाए थे, लेकिन यहाँ कम बैक किया है। तारीफ़ करना पड़ेगी यूसुफ हबीब की, चकमा दिया है अपनी गेंदबाजी से। धीमी गेंद की थी, उसके धीमेपन से पूरी तरीके से चूके गेंद उनके पैट पे लगी, जहाँ एम्पायर रेहान ने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की और अपने 2 उंगली फजा में बुलंद करते हुए बल्लेबाज को पवेलियन में जाने का इशारा किया और उसी के साथ दूसरा झटका और दूसरा सदमा कहना पड़ेगा हमें यहाँ उमेर इंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों के लिए। शुरुआत में ही बड़ी मायूसी के अंदाज में पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं अली इकबाल। ये देखते हुए ये पहला सेमीफाइनल है और बड़ी अहमियत का हामिल था अली इकबाल का खड़ा होना वहाँ, लेकिन जिस अफसोस के साथ वो आ रहे हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने अपने बल्लेबाजों को जिस मझधार में छोड़ा है
अब देखेंगे पवेलियन में बैठ के कि कौन सा बल्लेबाज है वो उनको इस मुश्किलात से निकालता है। शुरुआत में ही कहना पड़ेगा खेल पर काबू पाया हुआ है टोटल एनर्जी के गेंदबाजों ने, पूरी तरीके से बैकफुट पर किया हुआ है। यूसुफ हबीब और इमरान इदरीस की गेंदबाजी ने दोनों ही अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं। इमरान तीसरा ओवर कर रहे हैं। फॉरेन की ओर से गेंद करेंगे नए जाने वाले बल्लेबाज को। इस बार उठता हुआ शॉट था लेकिन डीप मिड ऑन पे फील्डर मौजूद। 1 रन से आते ही अपना खाता खोला आसिफ इजहार ने। और इस बार बैकफुट पर गए हैं। लो ट्रेजेक्टरी की गेंद को खेला है ऑन साइड पे। बैकफुट पर जाते हुए 1 रन का मौका था बल्लेबाजों के लिए और 1 रन के साथ बाबर पहुंचे 9 रन पर। और इस बार अपना रन अप खो बैठे थे गेंदबाज यूसुफ। एम्पायर का इशारा डेड बॉल का। यूसुफ अभी अगेन अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ आती हुई उस गेंद को स्पिन के साथ ही खेले ध्यान के साथ मिड ऑफ की जानिब। फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। और एक और डॉट बॉल वहाँ यूसुफ हबीब की जानिब से। यूसुफ हबीब 3 ओवर 19 रन 2 खिलाड़ियों के पवेलियन की राह दिखाते हुए 6.33 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हुए, जबकि उन दूसरे एंड पे उनका पूरी तरीके से किफ़ायती साथ दिया है इमरान इदरीस ने। 2 ओवर में 11 रन दिए हैं और मौजूदा रन औसत जो चल रहा है वो 6.20। 5 ओवर का खेल हो चुका है। 5वें ओवर के इख्तिताम पर 31 रन लगाओ 31। और यहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारियां फिर से हम देख रहे हैं। शाहनवाज आए गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने। शाहनवाज के लिए फील्डिंग की सजावट। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। शाहनवाज राउंड द विकेट गेंद करेंगे। बाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं ये भी। और इस बार मिडिल स्टंप पे पड़ी इस गेंद को स्वीप के अंदाज में खेले हैं, बल्कि स्वीप करते हुए ही खेले हैं। डीप मिड विकेट की जानिब डीप से फील्डर आके फील्ड करते तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बाबर मलिक पहुंचे 10 रन पर। शाहनवाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेन करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज आसिफ इजहार को। और इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, गेंद के टाइम को मिस किया लेकिन फिर भी खेलने में कामयाब हुए। ऑन साइड पे फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। और एक और डॉट बॉल वहाँ शाहनवाज की जानिब से। शाहनवाज की अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद, पूरे तरीके से ब्लॉक होल भी की गई। इस गेंद को इज्जत बख्शे हुए खेले हैं स्लिम डाउन की जानिब, जहां बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए और तीनों किफ़ायती गेंद की हैं कहना पड़ेगा। शाहनवाज ने सिर्फ 1 रन दिया है। शाहनवाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर और इस बार अगले कदम पे आए, फ्लाइट के साथ ही ड्राइव किया है। देखना पड़ेगा तब तक कि लॉन्ग ऑफ के फील्डर फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए। और ये इमरान इदरीस है गेंदबाज, क्योंकि स्कोर हमारे पास जो स्कोर अपडेट हुआ था उसमें शाहनवाज लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ दोबारा करेक्ट हुआ है। और इस बीच 6 मारा है और इस बीच 6 रनों के लिए खेले हैं बाबर मलिक, जबकि हम दुरुस्तगी कर रहे थे शाहनवाज के नाम की गेंदबाजी में।
इमरान इदरीस थे ये गेंदबाज जो अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। थोड़ी सी अपडेट में हमें लेट होने में हम शाहनवाज कह रहे थे, लेकिन अब इमरान इदरीस ही हैं। इमरान इदरीस फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार मिडिल स्टंप से पिक किया है। देखना पड़ेगा इस बार भी डीप मिड ऑन के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। गेंद टपकाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, एम्पायर रशीद का इशारा, 4 रन। और इस बार बाबर मलिक आए हैं जारहाना रूप में पूरी तरीके से, और रन बटोरे हैं इस ओवर में, और 12 रन बनाए हैं इमरान इदरीस के इस ओवर में। 12 रनों के साथ इमरान इदरीस 3 ओवर 23 रन। इमरान इदरीस जो कि पहले 2 ओवर अपने खासे किफ़ायती कर चुके थे, लेकिन इस बार रन बटोरे हैं जारहाना मूड में आकर बाबर मलिक ने। और बाबर मलिक पहुंचे 20 रन पर 13 गेंदों का सामना करते हुए, 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 153 की स्ट्राइक रेट के साथ। और वहां एम्पायर रेहान का इशारा पावर प्ले ख़त्म होने का, और अब जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म हो गई हैं दायरे की, और दायरे के बाहर अब, और दायरे के अंदर सिर्फ 4 खिलाड़ी रह सकते हैं, बाकी दायरे के बाहर। और वहाँ गेंदबाजी की तैयारी में फिर से बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज इस बार कट किया है। तब तक के पॉइंट के फील्डर फील्ड करते, मौका नहीं था बल्लेबाजों के लिए। 1 रन का और 1 और डॉट बॉल वहां से। अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद, फिर से दिफाई स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने। आसिफ इज़हार हैं ये बल्लेबाज जिन्होंने अभी ये रन लिया है। गेंदबाजी की जिम्मेदारियां यूसुफ हबीबी संभाल रहे हैं। फॉरेन की ओर से यूसुफ हबीब तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, गेंद करेंगे बाबर को, और इस बार फिर से एक और डॉट बॉल वहां यूसुफ हबीब की जानिब से। और इस बार फ्लाइटेड गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की जानिब। तब तक के फील्डर आके फील्ड कर रहे हैं, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। उस 1 रन के साथ 45 रन 6 ओवर के अख्ताम पर। 7वें ओवर का खेल हो रहा है, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, क्रीज से बाहर आए हैं, ऑन ड्राइव किया है उसे लॉन्ग ऑन की जानिब। तब तक के फील्डर आके फील्ड करें, मौका था बल्लेबाजों के लिए। 2 रनों का 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, और इसी के साथ 7वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 7वें ओवर के इख्तिताम पर अभी स्कोर अपडेट नहीं हुआ, बताएंगे आपको। सही तो है, 2 रन बने थे ना, जैसे लाइन आई थी आता क्या क्या बना। मैंने आपको वो सही हो गया। क्या स्कोर बोर्ड पे क्या बताना है? मसला ये आ रहा है कि वो जो लाइन 7 ओवर 46 रन 46, 7 ओवर 46 रन। 7वें ओवर के अख्तिताम पर 46 रन, और
बाबर मलिक खेल रहे हैं 21 रन पर 15 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 140 के स्ट्राइक रेट के साथ आसिफ इजहार खेल रहे हैं 4 रन पर। और यहाँ अच्छा किफ़ायती ओवर था, यूसुफ हबीब का सिर्फ 3 रन दिए हैं अपने। चौथे ओवर में यूसुफ हबीब अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, 4 ओवर 22 रन, 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वेल बोल्ड यूसुफ हबीब 5.5 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है और 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा है। यूसुफ हबीब ने अच्छा स्पेल किया है, अपने स्पेल से पूरी तरीके से बैकफुट पर कर रखा है उमर इंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों को, और वहाँ गेंदबाजी में तब्दीली हुई है। अब शाहनवाज आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने। इस बार फ्लैटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को अगले कदम पे खेले हैं डीप कवर की जानिब। तब तक के फील्डर फील्ड करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। शाहनवाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक बॉलर इस बार खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप पे पड़ी गेंद को लेग साइड पे छू के पूरी तरीके से गेंद गई विकेट कीपर के पास। शाहनवाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। आसिफ इजहार को, बाबर मलिक है ये बल्लेबाज, और इस बार फिर से डॉट बॉल वहाँ शाहनवाज की जानिब से। बाबर मलिक खेल रहे हैं 21 रन पर। शाहनवाज, और इस बार फिर से कट करना चाहते थे, एक उम्मीद सी पैदा हुई थी गेंदबाज के लिए। एम्पायर से इल्तिजा की थी लेकिन एम्पायर रशीद अपनी जगह अनमूव रहे। ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद इस बॉल को छेड़ना चाहते थे, बगैर गेंद की लाइन में आए, चूके पूरी तरीके से गेंद गई विकेट कीपर के पास। शाहनवाज गेंद करेंगे बाबर मलिक को, दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक बॉलर। इस बार स्ट्रेटर गेंद थी, बैकफुट जाके उसे बॉलर बैक ड्राइव किया है, लेकिन वहाँ शाहनवाज ने अपनी ही गेंद पर खुद ही फील्ड किया, अच्छी एफर्ट्स के साथ इस बार फील्ड किया था शाहनवाज ने। एक तेज़ शॉट था उसको। शाहनवाज फिर से तैयार, और इस बार ऑफ ब्रेक गेंद थी, ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद मिडिल स्टंप की तरफ आती हुई इस गेंद को पुल के अंदाज में खेले हैं डीप मिड ऑन की जानिब आसिफ बाबर मलिक। वहाँ लाइटें जलेंगी, देखिएगा लाइटें जलेंगी तो फिर वो आ जाएगा। उसी के साथ 8वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 8वें ओवर के इख्तिताम पर 48 रन, 2 विकेट खोकर उमेर इंटरप्राइजेज टॉस हारकर पहले बारी लेते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में 48 लगा, 48 48। लेकिन रुक रुक के चल रहा है, सही तो आ रहा है लेकिन रुक रुक के चल रहा है, अटक अटक के नहीं होता। और वहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारियां देखनी पड़ेंगी। यूसुफ हबीब अपने 4 ओवर पूरे कर चुके हैं, उनकी जगह कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालता है। वो जैसे पहले डबल डबल आ रहा था वो तो खत्म हो गया। अब वो अटक अटक के नहीं मुझे बता देना कॉल करना। वहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने आए हैं क्लब की ओर से मुतशिम अली। मुतशिम अली भी बाहिनी हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। राउंड द विकेट गेंद करेंगे एम्पायर और विकेटों के दरमियान से। 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे पहली गेंद को बैकफुट पर जाते हुए खेले हैं। ऑन साइड पे डीप लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन के लिए बाबर मलिक थे ये बल्लेबाज। बाबर मलिक पहुंचे 22 रन पर। मुतशिम
और इस बार फ्लाइटेड गेंद को पिक किया है, देखना पड़ेगा। लॉन्ग ऑफ के फील्डर देख रहे हैं गेंद की उड़ान को, और गेंद उड़ान भरती हुई एम्पायर रेहान के हाथ, दोनों हाथ फजा में बुलंद हुए 6 रनों के लिए। भरपूर कुव्वत वाला शॉट कहना पड़ेगा। आसिफ इजहार थे ये बल्लेबाज जिन्होंने फ्लाइटेड गेंद को दिखाया है 6 रनों का रास्ता। और इन 6 रनों के साथ 55 रन, 2 विकेट खोकर मौजूदा रन औसत 6.60। मोतशिम अली फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार फ्लाइटेड गेंद की कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, देखना पड़ेगा। गेंद में उड़ान दे बैठे हैं, उछाल दिया है कवर की जानिब, जहां मजहर कप्तान गेंद के नीचे आए और एक आसान सा कैच लेता हुआ पवेलियन की राह दिखाई है बल्लेबाज को। और ये आउट होने वाले बल्लेबाज आसिफ अजहर थे, जो कि इससे पहले एक लंबी हिट खेल चुके थे 6 रन के लिए, लेकिन इस बार फिर से इस बार ऑफ स्टंप की लाइन सेलेक्ट की थी, कमान के साथ नहीं खेल पाए, बल्ले के बीचों बीच खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का थोड़ा सा मोटा हिस्सा लिया और हवा में गई, जहां कवर पे कप्तान ने कोई गलती नहीं की। और इसी के साथ ये तीसरा झटका और तीसरा सदमा हम कहेंगे आसिफ इजहार के रूप में लगा है यहाँ उमेर इंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों को, जो कि टॉस हार कर बारी ले रहे हैं। नए आने वाले बल्लेबाज आसिफ लेकिन बाबर मलिक अभी क्रीज पर मौजूद हैं। बाबर मलिक जो कि सलामी रूप में आए थे इनिंग का आगाज़ करने, अभी एक आस हैं, एक उम्मीद हैं, एक धारस हैं अपने बल्लेबाजों के लिए। जब तक बाबर क्रीज पर खड़े हैं तो बल्लेबाजों को एक उम्मीद और एक आस होगी, लेकिन उनके सामने अब तक वो देख रहे हैं बल्लेबाजों को अपना साथ छोड़ते हुए वक्फे वक्फे से। बाबर मलिक खेल रहे हैं 23 रन पर 21 गेंदों का सामना करते हुए, 2 चौके और 1 छक्का लगाया है। अपने पहले ही ओवर में कामयाबी हासिल की है मोतशिम अली ने, जो कि पिछली गेंद पे उनको एक छक्का दिया लगाया था। बल्लेबाज ने कम बैक किया उन्होंने और विकेट चटकाई, और इस बार बैकफुट पर जाके ड्राइव किया। आसिफ ने आते ही अपना खाता खोला और 1 रन के साथ 56 रन 56। शाहनवाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, बाहिने हाथ से रॉन्ग द विकेट गेन करेंगे। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 ऑन साइड पे, ऑफ साइड पे, डीप कवर लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए। इस बीच शाहनवाज की गेंद फ्लाइटेड गेंद अच्छी गेंद थी, धीरे से फ्लाइट और स्पिन के साथ दबाते हुए खेले ऑन साइड पे, तब तक के बैकवर्ड शॉट लेके फील्डर आके फील्ड करते। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। मोतशिम फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार कम फ्लाइट के साथ ये गेंद थी, बैकफुट जाके उसे खेला है और ये एक उम्मीद सी पैदा हुई है। पहले रन की दौड़ में डायरेक्ट थ्रो लगी है, एक एम्पायर ने रेफर किया है थर्ड एम्पायर के लिए, और बड़ी बारीक बीनी से देखना पड़ेगा थर्ड एम्पायर को, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्रो लगी थी। वहाँ तारीफ करनी पड़ेगी फील्डर कौन था एम्पायर रशीद खान ने रेफर किया है थर्ड एम्पायर को, और तारीफ करना पड़ेगी यहाँ स्पोर्ट स्ट्रीम के काविशों की, जिस तरीके से कैमरों से कवरेज करते हैं। यहाँ एक्शन रिप्ले
ये तो है डायरेक्ट नहीं लगे लकीर नहीं आ रही ना यहाँ पे वो जो कैमरा कहाँ है कैमरा यही लग गया लाइन नजर नहीं आ रही साइड में क्या नहीं होगी लाइन कैसे नजर आएगी बता अपने जजमेंट दे दो भाई क्या दे दो हाँ भाई क्या है वो रिप्ले में वो लगा के रखो इमरान रिप्ले में क्या लगाया रिप्ले में वो लगा दो रिप्ले ना और यहाँ थर्ड एम्पायर का फैसला नॉट आउट और इस दौरान कितने बना देना 2 रन हासिल किए थे बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों के साथ 60 रन अच्छी थ्रो थी लेकिन वहाँ बल्लेबाज खासे तेज दौड़े थे और आखिरी लम्हे में उन्होंने बल्ले को जब क्रिस के अंदर रखा तब बेल्स गिरी थी तो थर्ड एम्पायर ने बहुत ही गौर से देखता हुआ नॉट आउट करार दिया गेंद कौन कर रहे हैं शाहनवाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर यार आप थोड़ा सा इधर आ जाओ तो उसको उसमें डाल के ना चला दो थोड़ी शाहनवाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर इस बार गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी पुल किया है उसे खूबसूरती के साथ मिडिल स्टंप से पिक करते हुए किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं गेंद मिड ऑन और मिड विकेट बाउंड्री के बीच 4 रनों के लिए शाहनवाज की पहली गेंद का इस्तकबाल किया है 4 रन के लिए और इस बार फिर से खेले हैं इस बार ऑफ स्टंप से लिया है लेकिन डीप मिड ऑन पे फील्डर मौजूद एक ही रन बना सकेंगे बल्लेबाज 1 रन पूरा किया दोनों ने 10वें ओवर का खेल हो रहा है शाहनवाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को फ्लाइटेड गेंद को अगले कदम पे आया है खेला है उसे बल्ले के बीचों बीच लेते हुए अगले कदम पे इस बार दिखाया बल्ले का वो कूदा और बल्ले के बीच का स्ट्रोक जो होता है खेला है और ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक अंपायर रशीद खान का इशारा 6 रनों का अच्छा शॉट कहना पड़ेगा बल्लेबाज का जो ही गेंद को थोड़ा सा और फ्लाइट गिरते देखा कदमों का इस्तेमाल किया दिखा दिया उसे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री का रास्ता 6 रनों के लिए इस बार बहुत अच्छी गेंद कमबैक किया है इस बार शाहनवाज ने ऑफ ब्रेक गेंद कम फ्लाइट के साथ पूरे ध्यान से और पूरी इज्जत के साथ खेले इस बार दिफाई अंदाज में बल्लेबाज और इस बार फिर से अच्छी गेंद थी इस बार बैकफुट पर जाते हुए खेले हैं धीरे से कवर की जानिब यूं ही कवर के फील्डर को थोड़ा सा सुस्त देखा अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ 65 रन बाबर मलिक पहुंचे 32 रन पर आसिफ खेल रहे हैं 7 रन पर शाहनवाज अपने ओवर की आखिरी गेंद कर रहे हैं दाहिने हाथ से और इस बार गेंद अच्छी गेंद ऑफ ब्रेक गेंद अंदर की तरफ आती हुई उस गेंद को बैकफुट पर चले गए थे कमिट हो गए थे आखिरी लम्हे में बल्ला अड़ाया गली की जानिब रन लेने का कोई मौका नहीं था बल्लेबाजों के लिए उसी के साथ 10वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा 10वें ओवर के इख्तिताम पर 72 रन 72 लॉस ऑफ 3 विकेट उमर इंटरप्राइजेस लूजिंग द टॉस एंड बैट फर्स्ट और यहाँ कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर खेला जाने वाला ये पहला सेमीफाइनल है 35वां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट
रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। टोटल एनर्जी और उमेर इंटरप्राइजेस के बीच। टोटल एनर्जी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रहे हैं और अब तक 72 रन बने हैं स्कोर बोर्ड पर 7.2 की औसत से। और वहाँ बाएं हाथ के गेंदबाज जिनकी पहली गेंद आसानी के साथ खेली, ऑफ साइड पे 1 रन के लिए बाबर मलिक खेल रहे हैं। 32 रन पर सामना करेंगे मोतशिम अली का। और इस बार अच्छी गेंद कट करना चाहते थे, गेंद की कहीं भी लाइन में नहीं थे, गेंद से पूरी तरीके से चूके और किस्मत वाले रहे इस बार। गेंद ने बल्ले का कोई भी किनारा नहीं लिया, वरना विकेट कीपर इस बात के लिए तैयार थे। मोतशिम बाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज, बाहिने हाथ से राउंड द विकेट। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। और इस बार बैकफुट पर जाके खेला है। उठता हुआ शॉट है, लेकिन शॉट में इतनी बकुवत नहीं थी। मोतशिम फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क लॉन्ग ऑन की जानिब। तब तक के फील्डर आके फील्ड करते, मौका तो बल्लेबाजों के लिए 1 रन का आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। उम्मीद सी पैदा हुई है। मोतशिम फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को। इस बार गेंद अच्छी गेंद और पूरी खेलना चाहते थे, गेंद के स्पिन से चूके, गेंद गई विकेट कीपर के पास। वेल बॉल मोतशिम, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मोतशिम, पूरी तरीके से बैकफुट पर किया हुआ है बल्लेबाजों को। और अब तक 2 रन दे चुके हैं मोतशिम अपने इस ओवर में। दूसरा ओवर कर रहे हैं और इस बार बैकफुट पर गए हैं, अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेल दिया है उसे पॉइंट की तरफ। तब तक के डीप से फील्डर आके फील्ड करते, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। मोतशिम फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, बाहिनी हाथ से राउंड द विकेट गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को। 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे। ऑफ साइड पे लॉन्ग ऑफ लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप कवर भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, इस बीच स्वीप करते हुए खेले हैं डीप मिड विकेट की जानिब। तब तक के डीप से फील्डर आके फील्ड कर रहे हैं, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। स्कोर अपडेट कर नहीं ना, यहाँ नहीं वो करेगा ना, तो बोलना नहीं ना बात। 11वां ओवर ख़त्म हुआ, इसको करना है, करेगा तो होगा ना। 11वें ओवर के अख्तिताम पर अभी स्कोर हमारा अपडेट नहीं हुआ, जैसे ही होता है 11वें ओवर के साथ में। शुक्रिया राशिद। 76 रन, 76 रन, 76 लगाओ। वो तो नीचे रखा हुआ, वो तो आएगा भी नहीं। आसिफ खेल रहे हैं 10 रन पर, बाबर मलिक खेल रहे हैं 34 रन पर 29 गेंदों का सामना करते हुए। 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 117 के स्ट्राइक रेट से बारी ले रहे हैं बाबर मलिक। और पूरी आस है, पूरी उम्मीद है अपने बल्लेबाजों के लिए। सलामी रूप में आए थे इनिंग का आगाज़ करने, क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन बगौर कहना पड़ेगा गेंदबाजों की गेंदबाजी का जायज़ा ले रहे हैं, पिच को भी रीड कर रहे हैं। अब देखते हैं कब वो अपना जारहाना रूप इख्तियार करते हैं, क्योंकि मौजूदा रन औसत वो 6.91 है। प्रोजेक्टेड स्कोर 138 का है, लेकिन अगर मैच में अपडेट रहना है, एक महफूज जो स्कोर होगा मैच के लिए 160 का अगर हदफ सजाते हैं, तो अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे।
11वें ओवर के अख्तिताम पर 76 रन हो चुके हैं और मैं अब आगे का आंखों देखा हाल अपने साथी कमेंटेटर जनाब उमर खां के को माइक देता हूं अंग्रेजी में कमेंट्री के लिए. ओवर टू मिस्टर उमर. Thank you, Mr. Mirza Kamar Beg, and I've been welcomed with a wicket. The batsman seems so disappointed. Asif is the batsman. And there's a discussion. I wonder what the discussion is about, but yes, he's out. So fourth wicket down for UMER Enterprises. The first semi-final of 35th Karachi GYMKHANA UMER Associates Ramazan Cricket Festival. UMER Enterprises and Total Energy are facing each other. UMER Enterprises have lost all their main batsmen, who were scoring runs for them. They were relying heavily on Ali Iqbal, who was dismissed on the second delivery. He hit a 4 on the first delivery and got LBW out on the very next delivery, while Babar Malik is still batting on 35. Ijaz Khan dismissed for 16, and Asif Izhar was out for 11, and the last wicket to fall was Asif. So last batsman to be dismissed, Mohammad Asif, out for 10. Nawaz Babar is the new batsman now. 77 for 4, UMER Enterprises, the batting at under 7 runs an over. While the journey of Total Energy in this tournament has been very interesting. Yesterday they lost against Fact Date. Fact Date required 6 runs of one delivery to qualify, and they managed to hit a 4, and with the finest of margins, Total Energy qualified despite losing their last game and ending up on same points, and that was courtesy of that heroic innings by Adil Khan, where Total Energy chased the total in around 12 overs, their third game, and that helped them to qualify. But it's a new day. 77 for 4, we're into the 12th over. This time bowl onto the middle leg stump, carved towards the square leg region for 1. Score ticking 78 for 4. We've had some wonderful games. Even yesterday, the game between KG and UMER Associates was a brilliant match to watch. It was another knockout game where we saw a roller coaster game in KGA winning in the last over. This time he used his feet and hit it towards long off for 1. So 79 for 4. The boundary flow has stopped ever since they've lost wickets. Although Babar Malik is there, he's looking good. He's hit 3 4s and a 6 so far, and he's hit it again, but straight to the fielder who juggled the ball and caught it finally. Saeed bin Nasir, who has been brilliant in the field, who took a brilliant catch against Karachi GYMKHANA as well in the same area of mid wicket. This time
He ran around 5 to 10 meters, judged it, nicely juggled it as well, but in the third attempt, he finally caught it. So 79 for 5, Omar Enterprises. 79. And to give any hope, they need at least 150 on the board, which seems very unlikely. They're 79 for 5. They've lost half of their team. Nawaz Babar was the batsman. Gone for 1 only. Yusuf Habib has finished his spell for the day. He's picked up 2 wickets for 22 runs. Omar Ahmed has picked up 2 wickets in his very first over and conceded only 3 runs. So now we'll start the 13th over of the innings. Mohtasham to continue. He's bowled well, conceded 16 runs and picked up a wicket. The projected total for Umar Enterprises, if they go at the same rate of 6.58, they'll manage 132. They would definitely like a few more than that. This time, chance, but just short. Wicketkeeper Adil made an effort, but it was out of range. Maybe 15 years before he would have jumped at it. But 1 run added, now 80 for 5. Mohtasham to continue. Babar Malik on strike, batting on 36. Ball onto the middle off stump and he's headed towards the short third man region. 1 run added. So Total Energy won't mind singles here. They'll be happy if they can restrict Umar Enterprises to 120-30. Omar Enterprises would definitely be eyeing over 150 even from here after losing 5 wickets. This time he goes for the reverse hit. Appeal, but turned down by the umpire. So dot ball. 2 runs only of the first 3 deliveries. 81 for 5, Omar Enterprises. Ashraf is the new batter. Mohtasham is bowling. Played a crucial role yesterday as well. Single to long leg. This time fuller ball, he's hit it towards mid wicket and it's stopped. Well fielded on the mid wicket boundary. 2 runs added to the total. '84. This time ballooned in the air and he's dropped it. Chance of a run out. So blunders. It was a straightforward catch.
It was a simple catch. He missed the catch, then there was this opportunity of a run out. Both missed. Babar Malik was the batsman. The only hope left for Umar Enterprises. How much will this drop catch cost total energy? It was a straightforward catch. And in the end, 84 for 5 after 13 overs. 7 overs remaining in the first innings of the first semi-final of 35th Karachi Gymkhana Umar Associates Ramazan Cricket Festival 2022. We've had a brilliant tournament so far. We've seen some amazing matches, some outstanding performances. Ram Ravi yesterday became the first batsman in the history of Gymkhana's Ramazan Cricket Festival to score 3 centuries in a single tournament. We've seen some good bowling performances, some all-round performances, some brilliant catching. It has been a wonderful tournament on this historic cricket ground of Karachi Gymkhana. This is the same ground that helped Pakistan cricket team to gain their test status as they defeated the MCC team in 1952. That helped them gain their test status. This time carved towards the deep cover region. 2 runs added to the total, 86. Now for 5 wickets, Umar Enterprises were into the 14th over. Next delivery, this time trying the reverse hit again. This time he connects and connects it well enough to get a boundary. 4 runs added to the total. That's what Umar Enterprises need right now. They need boundary every over from here. And Ashraf, he backs himself with a switch hit. He's tried that many times in the previous games, even today. He failed to connect previously, but this time he made no mistake. And the bowler should be more cautious to be ready for that switch hit as well. This time he's tried it again, but chance for the fielder, but it falls safe. So 2 more runs added. But when he backs himself so much for hitting switch hit, why does he bat right-handed? He should bat left-handed, as he's hit more switch hits than a normal cricket shot. Ashraf again in strike. This time no switch hit. He's hit it straight to long on. 1 run added to the total. So good over so far, as 9 runs have came off the first 4 deliveries, 2 deliveries remaining. This time he's hit it towards mid-wicket for 1. Ten runs of the over so far. Another switch hit attempt, and this time he's out. A little too many attempts for the switch hit. And the bowler was prepared for this. He bowled it wicket to wicket. He caught it right in front of the wicket. Ashraf dismissed on attempting another switch hit right in front of the middle stump.
It was crashing into middle of the middle stump. शायद 94 for 6, Omar Enterprises after 14 overs. We saw KGA managing 142 from a position where they were 8 down for 83. What can Omar Enterprises manage from here? The 94 for 6, still 36 deliveries remaining. Baba Malik still on the crease, batting on 40. Can he go all the way till the 20th over, give some decent total to bowl at to his team? Mohtasham to continue. This time flighted delivery is headed towards mid-wicket for 1. The new batsman on strike. Shahid Iftikhar is the batsman. This time flighted delivery, 1 towards long off. Score ticking, 96 now into the 15th over. This time flatter trajectory by Mohtasham. He's hit it towards long on. He wanted to come back for the second. No, said by Babar. It's 97. 3 deliveries remaining in the over. 3 singles of 3 deliveries. Shahid Iftikhar on strike. Mohtasham to bowl the 4th ball. This time outside, off stump, and it's defended. No, he's gone. What a soft dismissal. I thought he defended the ball, but he's cleaned him up. What a soft dismissal. So 7 down now for Umar Enterprises. They are the only team in the tournament who are unbeaten. They drew a game against Umar Associates from an unbelievable position, but with 7 wicket down and 97 runs on the board. I think they're in deep trouble unless Babar can bat all the way till the 20th over. Somehow, if they can reach the 140 mark, they'll have something to bowl at, but Total Energy has got a very deep batting line. They've got some very explosive batsmen up front.
Mohtasham to continue. 2 deliveries remaining in the 15th over. 97 for 7 now. Safir is the new batsman. This time he's cut it hard but straight to the fielder. No run added. So Mohtasham won actually they lost the game total, but they qualified, but it was due to the heroics of Mohtasham. He's continuing his form today. This time flight delivery outside off stump. He's hit it towards the long off region. The fielder did well, but the batsman still managed to get 2 runs. So 99 now, Omar Enterprises. End of the 15th over. 5 runs off the over and a wicket. So Umair Ahmed was the bowler in the previous over. Umair Ahmed, his 4 overs went for 32 runs. He picked up 3 wickets. Mohtasham conceded 30 runs in his 4 overs, picked up a wicket. While Yusuf Habib has conceded. अभी तो कल का है. Sorry, my bad. I was looking at the other scorecard. Some confusion here. Mohtasham, he's picked up 2 wickets for 26 runs in his 4 overs. Umair Ahmed has picked up 3 wickets for 13 runs in his 2 overs. The previous scorecard I was talking about was from yesterday's game against Fact Date. And today in Omar Enterprises, 99 for 7, total energy, high on confidence, especially the way they've qualified for the semi-final. Now, beginning of the 16th over. This time he's used his feet and hit it towards mid-wicket. 2 runs added to the total, so this brings up the 100 for Omar Enterprises. 101 for 7, they're into the 16th over. So dot ball to start the over.
Now single added to the total after 16 overs, 109. 50 up for Babar Malik, 42 balls he took for his half century, 4 fours and 1 6. But the job is still not done. 10 runs of the last over. They're 109 for 7. With 4 overs remaining, they can still manage to get 150 if Babar Malik stays on the crease. They're 7 down. And it would be a wonderful recovery if somehow they can inch close to the 150 mark. This time, Safir on strike, single of the first delivery. We're into the last 23 deliveries of the first innings of the first semi-final of 35th Karachi Gymkhana Omar Associates Ramazan Cricket Festival. Safir on strike. He's batting on 3. And he's connected it well. But the fielder at mid-wicket fields it. 2 runs added to the total 3 runs of the first 2 deliveries. $112 on the board. 22 deliveries remaining. Safir Khan batting on 5.
This time a quicker delivery outside off stump. He's headed towards the short mid-wicket region for 1. So 113 now. This time hit towards the long on region. 1 run added and 1 it will be. So score ticking slowly, but they're scoring runs despite of losing 7 wickets. They're 114 for 7. This partnership has been 17 runs so far. This time he's hit it towards the long on region again for 115. Decent over, 6 runs off it only. Babar on strike is batting on 52, definitely be eyeing a boundary. It's a very... And this time again hit towards the long on for 1. So 7 runs of that over. The field placing of Total Energy is very interesting. They've kept a mid-wicket which is way towards the long on side and he's on the edge of the circle. So there's a fielder in between of mid-wicket and long on, and he's played his role because most of the balls has gone in the same region. So 7 runs of that over, 116 for 7. 3 overs remaining. Babar is still batting on 53. Safir Khan on 7. नहीं वो अभी मीटिंग है ना 5 बजे सब निकाल के रखूंगा मैं डिसाइड करना है किसको क्या देना है किसको फेवर करेगा This time he's headed towards the long off region for 1. So Total has shrinked onto the boundaries. They're not letting them score freely. Just to 1 of the first 2 deliveries of the 18th over. This time flighted loopy deliveries, hit it well enough. And the boundaries that were not coming. Mutashim. Finally, a welcome 6 from the bat of Safir Khan. He's batting at number 9, yet he can hit the ball long. And UMER Enterprises need a few more hits like that. Somehow they can reach near 150. They still have a chance. This partnership is now 26, crucial 26 runs for UMER Enterprises. Safir batting on 13 now. This time he's bowled it quicker outside off stump and the umpire has signalled a wide ball. Now 124. Still 3 balls remaining in the over. This time he's connected it again, but straight to the fielder. And he's out caught.
So 8th wicket down. Safir Khan out, caught on long on. This is the 4th wicket for Omar Ahmed. Conceded 31 runs and picked up 4 wickets. So good comeback after getting hit for a 6. He's got his man. This time he's hit it well and fielded on the long off. Boundary, 2 runs added. अकाउंट नंबर थोड़ी तो जमा हुआ ना. This time hit towards the long off fielder for 1. 128.
The fifth delivery of the 19th over. This time he's headed towards the long leg region for one. Second run now. 133. This time fuller delivery, and is he out? The way Adil ran, I thought he's dismissed the batsman, but it was just a dot ball. So 19 overs gone, 133 for 8. Babar still batting on 62. He's there. But UMER Enterprises will be relieved as they were 94 for 7. But it seems like they'll cross 140. So they at least have something to bowl at. We saw KGA defending 143 yesterday. They were 83 for 8 and they managed 142 and won the game by 9 runs. UMER Enterprises are yet to lose a game in this tournament so far. They're the only unbeaten team. And this time inside edge, running towards the fine leg region. And it's a welcomed boundary. The batsmen will take runs either way. They don't care how they come as long as they're coming. This was well bowled. The batsman was beaten inside edge and went to the vacant area of fine leg for 4. So 4 runs to start the over. And seems like the non-striking batsman Inna Babar is struggling. It's natural that he's cramping. He's batting on 62 of 53. It's not easy at all. He's cramping. And he's walking back. It's very hard in this heat to fast and play. But he's done his job. He's scored 62. Brave innings by Babar. 62 of 53. Babar Malik, he's retired. So now, last wicket. This time he's hit it towards the cover region. 1 run added. So 5 runs of the first 2 deliveries. $138 now.
Six runs of the first three deliveries remaining in the first innings. And this time it's balloon in the air, chance for the fielder, valiant effort, but fell safe. 2 runs added to the total, 141. (141). 8 runs of this over so far. And he's dropped it again. It was the last wicket. 2 runs added. So when the matches go to the wire, these 1 run, 2 runs, they all count. Even Baba Malik was dropped before, and that has helped Omar Enterprises to reach this total as well. This time, last delivery is hit towards long on. They're running hard. They will come back for the second. Will they reach? And they have made it. Fumbled by the bowler. So 145. 12 runs of the last over. And Omar Enterprises will accept this. They were 94 for 6. Baba Malik was dropped when he was batting in 30s. He went on to score 62 and then retired. 146. 146 is the target for Total Energy to reach the final of the 35th Karachi Gymkhana Omar Associates Ramazan Cricket Festival. We'll join you shortly with the run chase. All eyes on Adil. See you after the innings break.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and a very good afternoon from the Karachi Gymkhana ground, lush green ground, but we have a heat wave in Karachi and the sun really can be felt out there. It's hot, it's torrid, and it's a challenge to play cricket, competitive cricket in this environment. But this is the first semi-final of the 35th Karachi Gymkhana Ramazan Cricket Festival being played for the Omar Associates Cup. And the position here is that Total Energy won the toss and elected to field. Omar Enterprises scored 145 runs. The target is 146. We have umpires Rashid Khan and Muhammad Rehan out there in the middle, while the third umpire here with us in the commentary position is Ehsan Babar, and the umpires are out there in the middle, play about to get underway. The two batsmen limbering up, walking to the middle. SM, sorry. My apologies. The third umpire is SM Babar, who's with us here in the commentary position. And the two batsmen for Total Energy out there in the middle. जी इनाम और दूसरा अली अली दूसरा अदील खान फेस कर रहा है और दूसरा अरशद आजम अदील खान इज फेसिंग अच्छा और दूसरा मोस्ट आजम क्या दूसरा अरशद आजम अर्शद बोले बॉलर है सफीर खान कहाँ से बोला ना मैं तनवीर से कमर में बात कर रहा हूँ तनवीर और बोलते हैं field being set by the Omar Enterprises captain, fielders limbering up. It's extremely hot out there in the middle. Extremely hot out there in the middle. And it's going to be Safir Khan to start the proceedings from the club road, and he will be bowling to Adil Khan. Umpire Muhammad Rehan supervising the proceedings from the club road end. Muhammad Rehan. And here comes Safir to Adil Khan. Good delivery, great line and length, and Adil forward defensive ball rolls to the bowler, picks it up on his, and no runs. This is the first of the 6 overs with fielding restrictions and only 2 fielders outside the inner circle. One is at square leg and one is at long on. Here comes Safir. And this one has been guided to fine leg, and the batsman run for a single. Good run. That takes the score on to 1. 1 for no loss. Total Energy in reply to 145 by Omar Enterprises. And it's going to be Safir to Arshad Azam. Arshad, tall, lanky batsman. Here comes Safir to Arshad. This one outside the legs, off stump, and it's been cut to the backward
point, boundary, 4 runs. Great shot there by over the inner circle of fielders. Great shot by Arshad Azam. That takes the score on to 5. 5 for no loss. And this is the first over being bowled by of the innings, and it's being bowled by Safir Khan. Safir. So here comes Safir to Arshad Azam. And this time there's a little bit of football there by the fielder at cover, but no damage done, no runs. The batsmen don't want to take any chances, so it's going to be Safir to Arshad Azam again. Here he comes. This one straying down the leg side, and it got the treatment it deserved. Pull to mid-wicket for 4, and that takes the score on to 9. 9 for no loss. Total energy. 9 for no loss. And this is the first over. Ball was short, and it gave enough time to Arshad Azam to pull it to mid-wicket all along the ground. And it's going to Safir Khan to Arshad Azam. Here he comes. A good delivery, good line, and sensibly Arshad forward defensive dower back to the bowler. And that is the end of the first over. And at the end of the first over, their total energy are 9 for no loss. Now, nine for no loss, and let's see who's going to be bowling from the governor's house end. From the governor's house end, umpire Rashid Khan supervising the proceedings, and now we have Nawaz Babar, team captain. Nawaz. अच्छा ये नवाज को कैसे Nawaz Babar, the captain of Omar Enterprises, will be bowling from the governor's house end and limbering up while the field is being adjusted. A packed offside field, and it's going to be Nawaz Babar will be bowling to Arshad, to Adil Khan, yes. Nawaz Babar to Adil Khan, here he comes. And umpire signals dead ball as he didn't deliver the ball. He's going back to the top of his bowling mark, and here he comes. This one, and terrible fielding. 2 fielders couldn't collect that ball, and it's 4 runs to wide long off. This is not acceptable with the number of runs they've scored. A low scoring match. Each run matters, and that takes the score on to 13. Total energy at 13 for no loss. And this was a great shot by Adil Khan. And it's going to be Nawaz Babar, the captain of Omar Enterprises. And he will bowl to Adil Khan. Here he comes. And Adil Khan moves away. Umpire Rashid Khan signals a dead ball, no delivery, and here he comes again. There's some movement out there which we cannot see. Here comes, and this one, a great shot, played through the line, over the head of the umpire, 4 runs to long off. Great shot there, and that takes the score on to 17. 17 for no loss. Good shot there by Adil Khan. He played it through the line, and safe shot to play over the heads of the umpire and the bowler. Here he comes.
And this was a full toss, and that, let us see, and it got the treatment it deserved. 6 runs being signaled by umpire Rashid Khan, and that takes the score on to 23. 23 for no loss. Very loose bowling by Nawaz Babar. He's bowling short, and this one was a full toss which got the treatment it deserved. Now there's a fielder out there, he's trying to find the ball which was lost in the vegetation over there, and is found, and is back to Nawaz Babar, who will bowl to Adil Khan. Here he comes. This one outside the leg stump, and very short, and is Adil gets a single, and that takes score on to 24. Now Adil will be bowling to Nawaz will be bowling to Arshad Azam, tall and lanky Arshad Azam, taking guard from umpire Rashid Khan, while here comes Nawaz Babar to Arshad. This one outside the off stump and gently tapped to mid-off, and the batsman take a single, and that takes score on to 25. 25. And this one, wow, this has been driven beautifully through the line. Umpire Rashid Khan signaling 6 runs, and it seems we have lost the ball. Is he signaling? He's signaling, and the third umpire, S.M. Babar, will be taking the ball. Okay. ये माइक क्यों नहीं लगा रहे? हाँ? ओवर नहीं हुआ ना? हो गया? ओवर हो गया? 25 नहीं, अभी 6 ओके 31 यस नहीं और 2 ओवर के यार ये सो रहा है ये बंदा. And at the end of 2 hours, total energy 31 for no loss. Let's see who is going to bowl from the club road, and if there are bowling change. Safir Khan to continue. This will be his second over. The field slowly going to their positions. It stays the same. Man on the fence at square leg, and then on the fence at long on. And here is Safir Khan. He will be bowling to Arshad Azam. This one outside the off stump, cut to point, straight to the fielder. No runs, no damage done. And it's Safir Khan to continue. Better line this time. He will be bowling better line, better length, and he'll be bowling to Arshad Azam. Here he comes, Safir Khan to Arshad Azam. This one's been cut, and through the gap near the point, and the batsman scurry for 2 runs, and that takes the score on to 33. 33 for no loss, and this is a third over being bowled of the mandatory 6 overs with fielding restrictions, in which only 2 fielders can be outside the inner circle. And here comes Safir Khan. This one outside the off stump. He wanted to drive it through the offside, failed to make contact, and collected by the keeper. No runs. Back to the fielder now. Safir Khan to Arshad Azam. Here he comes. This time he was able to do what he wanted to do in the last ball, but straight to the fielder, no runs. Good bowling, better bowling there by Safir Khan. Good line, good length. The batsman
and Safir to Arshad Khan. Here he comes, Arshad Azam. This one on the leg stump, and he's picked it off his toes to mid-wicket, and the batsmen take 2 runs, and that takes the score on to 35 for no loss. And this is the 3rd over being bowled here today. We have a packed offside field, and Safir straying down the leg side, and luckily got away with just 2 runs. Here he comes. This one mistimed drive straight to long off, and misfielding there, and the batsman cross over for a single, and that takes the score on to 36. 36. That is the end of the 3rd over. 36 runs, better over, 5 runs came off it. And now 3 overs have been bowled, and umpire signaling towards the see who's going to be bowling from the Governor House, and if it's going to be Nawaz Babar, the captain. कौन है भाई? नहीं, ये कौन है? मौलवी साहब कौन है? I think Nawaz has brought on another bowler. Don't you? कौन है? मौलवी साहब. हेलो, सभी ने अभी कराया है ना? चेंज है ना? कौन है ये मौलवी साहब? कौन है? बॉलर कौन है? इजाज है. Ijaz Awan will be bowling from the Governor's House, and here he comes. And above, it's been driven to cover above the heads of the inner fielders. 4 runs. Great shot there by Adil, by Arshad Azam. And that takes the score on to 40. 40 for no loss, and it's Ijaz Awan bowling from the Governor's House end to Arshad Azam. Oh, and he is out. Nawaz Babar took a good catch at covers. The ball, he was Arshad Azam cutting the ball, but trying to drive the ball rather, and straight to the fielder down the throat. And that is the end of a nice innings by Arshad Azam. He seemed to be in a hurry, which, as the situation demands, a steady batting, careful batting. And we have now, and that is the end of Arshad Azam. And let's see, Ijaz Awan successful in the first over. His captain's faith, he has kept it. And now we have okay. And the new batsman is Saeed bin Nasser, who is very experienced and has scored a lot of runs in cricket in Karachi. Saeed bin Nasser. He will be facing Ijaz Awan. And the score is 40 for the loss of 1 wicket now, and this is the 4th over being bowled. Let us see, we have a long on the fence, and besides that, yes, and then the square leg on the fence, square leg walking to the fence. And change in field they're moving the fine leg. Now there's a slip as well. Good captainship. And this is, now he's coming into a gully position. And here we go. Ijaz Awan. And he stopped, didn't deliver the ball. Umpire Rashid Khan signaling
dead ball, while actually the fielders were moving. That's why this was done. And now they are in position, packed offside field. And this has been driven beautifully through the line, and 4 runs to long off. Great shot. Perfect shot there. This is the shot you want to play. Perfectly timed, and the ball rolled across the boundary right in front of us. 4 runs, and that takes a score on to 44. 44. Good shot there by Said bin Nasser. And here comes Ijaz Awan to Said bin Nasser. This one on the middle stump, short, and it's been clipped to mid-wicket, and the batsman will get 2 runs, comfortable 2 runs. It takes a score on to 46. Now 100 runs needed of the 16.2 maybe overs, and this time Said bin Nasser has driven it towards the cover position for a single. That takes score on to 47. 47 for the loss of 1 wicket. Ijaz Awan will now bowl to Adil Khan. Packed offside field, 1 to a slip in position, and here comes Ijaz Awan to Adil Khan, and this has been driven to cut to point, no runs, and that is the end of the 4th over. And the score is 47 for the loss of 1 wicket at the end of 4 overs. नहीं बोला उसको को 3 कम 50. 4 overs have been delivered and 47 runs have been scored. Good. And from the club road end, there's a bowling change. Seems to be. Kaun hai ye? Kaun hai? And Asif Ijaz will be bowling. Asif Izhar will be bowling in place of Safir Khan. Asif Izhar. And Adil Khan has selected the bat and is going back towards the non-striker's end, while because there was a single of the last delivery, so it's going to be Said bin Nasser to face Asif Izhar, and this is the 5th over. We have a long on the fence and mid-wicket. Safir. I'm sorry, it's Safir Khan to continue. This is his 3rd over. Yes. Said bin Nasir single liya aur aaya Adil Khan. 48, a single to Said bin Nasser and Safir to Adil Khan with the new bat. Here he comes. And this one, good line, good length, and Adil Khan very carefully forward defensive, and the bowler picks up on his follow through, no runs. 48 for the loss of 1 wicket, and this is the 5th over being bowled. And it's being bowled by Safir Khan. This is his 3rd over. Here he comes to bowl to Adil Khan. And Adil Khan's driven him. There's a big gap, but he didn't time it properly. Otherwise, this would have been, there's no fielder there. So the ball stops, the fielder runs in, and the batsman crossover for 2 runs, and that takes the score on to 50. This is the 50 of the total energy innings, 50 for the loss of 1 wicket, and it's going to be Safir Khan to Adil. Here he comes. And my word, that, let's see, he may
and he's out. He's caught at long on by Shahid Iftikhar, and that is a blow by Safir Khan for Omar Enterprises. And now let us see what Adil Khan, he was batting very well, he was looking dangerous out there in the middle, but mistimed this one, and a key batsman for Total Energy walking back, very disappointed with that shot he played. And let us see, the match is now starting to look like the one we saw yesterday. An exciting, low-scoring match. Yesterday they had scored 143 and they won the match, and today it's 145. The target is 146, and the new batsman. We have a drone camera right now out in the middle above the fielders, all gathered together in a huddle near the non-strikers end. And let us see who is walking in from Total Energy. It is Fahad Jabbar limbering up, walking out in the middle, while all the fielders slowly walking to their positions. Fahad Jabbar. Both the opening batsmen for Total Energy back into the pavilion. They've given them a start of about 50 runs. And it's going to be Safir Khan to Fahad Jabbar. While there's changes in the field, shifting of positions, fine-tuning the positions, and Safir Khan having a word out there. And he will be bowling to Fahad Jabbar. Packed outside field, point, cover. And this one's been pulled to mid-wicket, 4 runs all along the ground. Great shot there by Fahad Jabbar. And that takes... So, Saeed bin Nasser, and that takes a score on to... Okay, 54 for the loss of 2 wickets. This has been driven to cover, and good run there, good single. That takes the score on to 55. At the end of 5 overs, 55 Total Energy. And they required, at the beginning, they required 146 runs. And the required run rate are 6.07. So current rate is 11 runs an over. Required run rate is 6.07. So this should give a message to Total Energy batsmen. They've just got to stay in the middle and they will get the runs. 6 runs is easy. There's no hurry. They don't have to get a better net run rate. मुतशिम फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर इस बार. And 91 runs have to be scored of 90 deliveries, and this has been driven by straight and very poor fielding there again at the covers, and this gives 2 runs. When you are defending a low total, the fielders have to be with the bowlers. You cannot afford to give even 1 run away.
ये कौन है भाई? कौन है बोलो? ये वही है एजाज. नहीं नवाज. Nawaz Babar, the captain. And this was a full toss, but luckily it didn't get the treatment it deserved. Mid-wicket fence, so no runs. Then its score stays at 57. 57. And here comes Nawaz. Shot. And this one, and he's been caught Ashraf. at long on Ashraf Sagar. by Ashraf, and I said, this is Said bin Nasser. Said bin Nasser, one of the key players of Total Energy. There is no need right now to play such shots. You only have to score at run a ball, and he's a great player on the domestic scene, Said bin Nasser. And he scored about over 11,000 runs in domestic cricket. And now he's regretting this shot, but there's no need to play. All you've got to do is take the singles, and an odd loose ball should be dispatched to the boundary, but no need to hit sixes at this stage. They are winning anyway. And this is a sure recipe for losing if you keep on losing wickets. This is what T20 cricket is all about, especially in a match like this, which is low scoring and the fielders are misfielding. What else do you want? You want to just stay at the wicket, play sensibly. And this is 55 for the last of 3 wickets, Total Energy. This is totally not required. And Ijaz, Nawaz Babar, to continue, is doing a great job for his team, the captain. He will be bowling to, kaun hai bhai? Mazhar Hussain, who's coming, the captain of Total Energy. I hope he knows what is required run rate. It's only 6 runs and over. Let's play sensibly. And he's driven it straight to cover all along the ground, no runs. There is no requirement to improve your net run rate. Right now, you'll go directly to the final. And this time, when he's turned him round the corner near the square leg umpire, and a single, and that takes the score on to 58. 6 overs have been completed and 58 runs. And it's just a run, a ball. There's nothing complicated about that. No need to hit those big shots. An umpire signaling that the 6 overs fielding restrictions are over, and now they can bowl with a minimum of 4 fielders inside the circle, and everybody else can be at the boundary. We've got a fielder at the boundary at point, and then we have mid-wicket on the fence, and long on, not on the fence, he's almost at the fence, and a lot of changes in the field. Now they're moving the fine leg towards backward square leg on the fence. So we have 1, 2, Ali Abbas. and it's going to be Ali Abbas to bowl from the club road end. And this is a 7th over which will be bowled. Ali Abbas adjusting his field, and he will be bowling to Mazhar Hussain. Mazhar Hussain? Yes, Mazhar Hussain. He turns it round the corner to backward to square leg for a comfortable single. That takes the score on to 59. This is all that is required. Singles.
No chances. No, don't take any chances. Stay at the wicket. You'll win the match. Here comes Ali Abbas. And this has been driven through the covers, and the fielder runs in, and the bats to cover on the fence, 2 runs to the batsman. That takes the score on to 61. 61 for no loss. And Ali Abbas. Fajabar facing Ali Abbas. This one outside the off stump has been cut to point for a single, and that takes the score on to 62. 62 for the loss of 3 wickets. And it's going to be Ali Abbas to Mazhar Hussain. Yes, Mazhar has turned it round the corner and for a single, and he wanted a second run, but Fajabar very sensibly sent him back. That takes the score on to 63. See, the runs are coming, the runs are flowing, no chances are being taken. This is what is required now. Ali Abbas to Fajabar, good delivery, and he's not happy with himself. Good line, but you've got to keep your cool out there. No need to hit them out of the ground and get caught. This has been driven off his toes to mid-wicket for a single, and that takes the score on to 64. And at the end of 7 overs, 64. it's 64, total energy 64 for the loss of 3 wickets while chasing 145. They need 146 runs to win the match. They've already got 64 runs in 7 overs. 7 overs, 64 बाकी क्या है? 100. हाँ, नहीं. 9.1 चल रहा है और 6.3. The current run rate is 9.1, and we have 6.3 is the required run rate. And Nawaz Babar, the captain, to continue, and he will be bowling to कितने बॉल हैं, कितने रन हैं यार? 82 रन और 78 बॉल है. 82 of 78 deliveries, very easily doable, and this one turned round the corner. Now this is exactly towards a short mid wicket, a single. This is exactly what is required. 65 now, 65 for the loss of 3 wickets, and it's Nawaz Babar, and he's bowling to Mazhar Hussain. Nawaz to Mazhar. This one outside the off stump, straying outside the off stump. It's been cut to the pound boundary, and the batsman crossover for 2 runs. See, this is how you have to play this match. It goes on to, the score is on to 67. The runs are coming. You don't have to take any chances. 67 for the loss of 3 wickets, and Babar, Nawaz Babar to Mazhar Hussain. This one on the middle stump, and forward defensive. This is what's going to make this match go total energy's way. Nawaz Babar to Mazhar Hussain. He comes in and bowls, and it's been driven towards cover, and the batsman amble across for a single, and that takes the score on to 68. 68 for the loss of 3 wickets. And it's going to be Nawaz Babar to Fahad Jabbar. They have to stay steady. Fahad Jabbar, he's going to come in. This one short on the off stump, and it's been punched through the cover straight to the fielder. 1 run, and that takes the score on to 69. The scoreboard ticking away without taking any chances, and it's Nawaz Babar.
and now and goes towards, ball trickles towards cover, close in fielder runs in, no runs, and that is the end of the 8th over. And 6 runs came out of this over, and that is what is the required asking rate. So they have to play sensibly total energy, and at the end of 8 overs, total energy are 69. Then for the loss of 3 wickets now they need 77 runs of the 72 legal deliveries remaining. And this can be a good match, and it's only total energy which can make it exciting by losing wickets. So they have to play steadily. They have to just get the singles, and they'll win the match. And with that, I will say goodbye and hand you over to our very own Mirza Qamar Beg, who will continue the commentary in Urdu. Mirza Qamar Beg. Thank you, sir. शुक्रिया जनाब मियाँ शौकत हुसैन साहब, जो अभी हमें अपनी दिलफरेब अंग्रेज़ी कमेंट्री से महसूस कर रहे थे। जब शौकत साहब कमेंट्री में मौजूद होते हैं तो हमें दौर याद आता है उमर ख़ान का, सिमिलर टू उमर ख़ान। और असल में कहना पड़ेगा जो अंग्रेज़ी की कमेंट्री की खूबसूरती है और किसी खूबसूरत डिलीवरी के साथ की जाए वो कमेंट्री, तो और भी क्रिकेट का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। जब शौकत हुसैन साहब कमेंट्री कर रहे होते हैं तो हम पूरी तौर से महसूस होते हैं उनकी कमेंट्री से। क्रिकेट की अप्रोच, बहुत ही अप्रोच के साथ कमेंट्री करते हैं। और इस बीच ये कट किया है थर्ड मैन की तरफ, इससे पहले कि फील्ड करें फील्डर। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। और यहाँ पहले सेमीफाइनल में 146 रन का पीछा कर रहे हैं टोटल एनर्जी के बल्लेबाज, और 3 बड़ी अहम विकेटें खो चुके हैं। खास अंदर वाले पे भी नहीं आ रहा। कौन से वाले पे? उस साइड वाला। 35वां कराची जिमखाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये मैच, ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। अंदर आ रही है, अंदर कहाँ आ रही है? कमरों में क्या आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है। पता नहीं क्या कौन है बॉलर, कौन? अली अब्बास की गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, ड्राइव किया उसे, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। मज़हर हुसैन खेल रहे हैं 9 रन पर, फ़हाद जब्बार खेल रहे हैं 12 रन पर। और कहना पड़ेगा ये जो चौथे विकेट की साझेदारी है बड़ी अहमियत की हामिल है टोटल एनर्जी के लिए, जबकि उनके आउट होने वाले बल्लेबाजों में अदील ख़ान, जो कि धुआंधार बारी खेलते हैं, इस बार अपनी पेशेंट को लूज़ करा और आउट होकर पवेलियन में जा चुके हैं। 24 रन की बारी खेली अदील ख़ान ने, 11 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के और 2 चौके लगाए 218 के स्ट्राइक रेट से। अरशद अजीम ने भी एक छोटी बारी खेली, 18 रन बनाए 13 गेंदों का सामना करते हुए, 3 चौकों की मदद से 138 के स्ट्राइक रेट के साथ। सईद बिन नासिर, जो कि पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट का जाना माना नाम है,
अपने बल्लेबाजों को बीच मंझदार में छोड़ के आए हैं 15 रन की बारी लेते हुए, 10 गेंदों का सामना करते हुए। 2 चौकों की मदद से 150 के स्ट्राइक रेट से। और यहाँ तारीफ करना पड़ेगी टोटल एनर्जी के गेंदबाजों की, जिस तरीके से मैच में आए हैं। और अब इस मैच को एक लो स्कोरिंग मैच बनाते हुए, जो कि जब तक बल्लेबाज सईद बिन नासिर और आदिल खान मौजूद थे तो ये हदफ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। इस बार कट किया है, लेकिन वहाँ बहुत ही अच्छी फील्डर की जानिब से तकरीबन 2 रन बचाए हैं अपने बल्लेबाजों के लिए, अपने गेंदबाजों के लिए। नवाज़ बाबर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज फहाद जब्बार को। इस बार गेंद अच्छी गेंद मिडिल स्टम्प की लाइन में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टम्प की तरफ आती हुई उस गेंद को धीरे से खेल आया ऑन साइड पे। तब तक के ऑन साइड पे फील्डर आके डीप से फील्ड करते, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। नवाज बाबर फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंद करेंगे। कमेटी की मीटिंग हो रही है, उधर डिसाइड करना है अभी किसको क्या देना है। जान भाई नाराज हो गए, बोले लेके आओ, तुम बोला आधे घंटे। नवाज बाबर अब तक 3.3 ओवर कर चुके हैं और 33 रन दिए हैं, 1 विकेट भी हासिल की है नवाज बाबर ने। और नवाज बाबर ने जो सईद बिन नासिर की एक बड़ी विकेट हासिल की थी, सईद बिन नासिर कहना पड़ेगा थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेला था वो, उस वक्त मौका नहीं था लंबी हिट का। आपका रन औसत जो दरकार था वो 6 के लगभग था। आपको सिंगल करके ही मैच को आगे ले जाना था, लेकिन बड़ी हिट लगाने में सईद बिन नासिर अपने बल्लेबाजों को तकलीफ में छोड़ गए हैं। और अब जो मौजूदा रन औसत है वो 6.19 है, अभी भी हाथ में है रन औसत। अगर ये 7 या 8 पे जाता रहेगा तो मुश्किल होता जाएगा, लेकिन बड़ी अक्लमंदी से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी मैच में हैं पूरे तरीके से टोटल एनर्जी के बल्लेबाज। 10वें ओवर के अख्तिताम पर 84 रन 3 विकेट खोकर टोटल एनर्जी टॉस जीतकर 146 रन का पीछा करते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल है जो कि खेला जा रहा है। आज सूरत अपनी पूरी आबोताब के साथ, सूरज का वो जो गुरूर पूरी तरीके से ज़ाहिर हो रहा है यहाँ ग्राउंड पर। लेकिन कराची की रिवायत है कि 4 बजे लगभग 4 बजे के बाद से थोड़ा सा सूरज अपना वो गुरूर तोड़ देता है और कुछ हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, समुद्री हवाएं। ये कराची का तोहफ़ा है, कराची के लिए नेमत है ये। लेकिन आज खासा फहद जब्बार सामना करेंगे। मज़हर हुसैन सामना करेंगे। इनाम आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी से मारने क्लब की ओर से। पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाते हुए इस गेंद को एम्पायर रेहान का इशारा, वाइड बॉल का, आती ही लाइन से भटके हैं इनाम। और इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, अगले कदम पे आए, ऑफ वाली पे लिया, उसे ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की जानिब। तब तक के लॉन्ग ऑफ के फील्डर आके उसे फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का और उस 1 रन के साथ 86 रन 86। 11वें ओवर का खेल हो रहा है। इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन उसको उतनी ही अच्छे अंदाज में खेला है दिफा के साथ।
ऑफ साइड पे, लेकिन मौका था बल्लेबाजों के लिए। एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। मज़हर दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज गेंद करेंगे इस बार फ्लाइटेड गेंद को फिर से खेला है धीमे से, और यही अंदाज अपनाना होगा बल्लेबाजों को अगर अपने बल्लेबाजों को कामयाबी दिलानी है इस सेमीफाइनल में, क्योंकि रन औसत बिल्कुल ही कहना पड़ेगा 20-20 के हिसाब से बहुत ही करीब है जीत के लिए। मज़हर दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, ड्राइव किया है डीप मिड ऑफ के फील्डर के लिए, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। रेहान का इशारा 4। जैसा कि हम कह रहे हैं आपको पेशेंट दिखाना पड़ेगा, सिंगल करने पड़ेंगे। जब सिंगल करते हैं तो एक आध चौका मिल ही जाता है, और अब रिक्वायर औसत 5.79 का हो गया है। इतना फ़र्क पड़ता है एक ही चौका लगने से, जो रन औसत 6.12 का था 5.79 है। आपके हाथ में 7 विकेटें अभी बाकी हैं, लेकिन फील्डरों के लिए खासी मुश्किलात हैं यहाँ अभी भी। काफ़ी मशक्क़तें उठानी पड़ेंगी गेंदबाजों को इस मैच में आने के लिए। और इस बार लेग ब्रेक गेंद थी, गेंद की स्पिन से चूकते हुए खेले, लेकिन मौका था थर्ड मैन पर। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। मज़हर हुसैन दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। इसी फील्डिंग की सजावट के साथ हमारी तरफ आते हुए मज़हर हुसैन की गेंद लेग ब्रेक गेंद लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई इस गेंद को शफल करते हुए टर्न किया है शॉर्ट लेग की तरफ। तब तक कि फील्डर आके फील्ड करें, मौका था बल्लेबाजों के लिए। एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इसी के साथ 11वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 11वें ओवर के इख्तिताम पर 95 रन 95, 3 विकेट खोकर टोटल एनर्जी 146 रन का पीछा करते हुए पहले सेमीफाइनल में। और जो रन औसत चल रहा है वो 8.68 है, और जो औसत दरकार है वो 5.67। तो कहना पड़ेगा पूरी तरीके से कमान हासिल है यहाँ टोटल एनर्जी के बल्लेबाजों को। बहुत ही 11 ओवर 95 रन। एक गेंदबाजों को खासी मुशक्क़तें उठानी पड़ेंगी, फील्डरों को भी, जो कि यहाँ हमने फील्डिंग लेग्स देखे हैं, मिस फील्ड करते देखा है फील्डरों को। तो ऐसे लो स्कोरिंग मैच में आपको मिस फील्डिंग बिल्कुल भी कबूल नहीं होगी, आपको जान मारनी पड़ेगी गेंदबाजी में भी फील्डिंग में भी पूरे तरीके से। यार वो स्कोरबोर्ड सही करवा। 95 सही तो है, और क्या है? ओवर पता नहीं कितने 11वां ओवर है भाई। और इस बीच 4 रन का इशारा एम्पायर की जानिब से। 11 ओवर 11। मैं देखेंगे आसिफ इज़ार कमेंट्री बॉक्स की ओर से फ्लाइटेड गेंद इस बार आसिफ इज़ार की अगले कदम पे खेले हैं आसानी के साथ। कवर पे खेलते ही 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। और उस 1 रन के साथ 100 रन भी मुकम्मिल हुए। और इस बार उड़ता हुआ शॉट था कवर की लॉन्ग ऑफ की जानिब, लेकिन महफूज।
आसिफ इज़हार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज, इस बार फ्लाइटेड गेंद धीरे से ऑन साइड पे खेलते ही रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज। रन पूरा किया और उस एक रन के साथ 101 रन। आसिफ इज़हार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। गेंद करेंगे इस बार मज़हर हुसैन को। 14 रन पे बैटिंग कर रहे हैं मज़हर। 16 गेंदों का सामना किया है और इस बार आसानी के साथ 1 रन लिया है मज़हर ने। फाज जब्बार खेल रहे हैं 30 रन पर। 20 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों की मदद से 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बारी ले रहे हैं फहद जब्बार, जो कि संभाला है फहद जब्बार और मज़हर हुसैन ने ये मैच चौथी विकेट की साझेदारी में अब तक 50 रन बन चुके हैं चौथी विकेट की साझेदारी में। इस बाउंड्री के साथ 50 रन की साझेदारी चौथे विकेट की 38 गेंदों पे और पूरी तरीके से मैच में लेके आई है ये साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। फहद जब्बार और मज़हर हुसैन की जो साझेदारी है तारीफ करना पड़ेगी। समझबूझ की बारी ली है दोनों बल्लेबाजों ने। 3 खिलाड़ी जबकि पवेलियन में जा चुके थे। अच्छे बल्लेबाज शुरू, जो कि तीनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए एक अहमियत के हामिल हैं। आदिल खान, अरशद अजीम और सईद बिन नासिर 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन में जा चुके थे, लेकिन यहाँ तारीफ़ करना पड़ेगी इन दोनों बल्लेबाजों की जिस तरीके से 50 रन की साझेदारी की है चौथी विकेट की। मज़हर हुसैन खेल रहे हैं 15 रन पर। फहद जब्बार खेल रहे हैं 34 रन पर और अपने बल्लेबाजों को एक इज़्ज़त बख्श मकाम पे जाके खड़ा कर दिया है और ख़ासे करीब हो गए हैं फाइनल के लिए।
और अब और यहाँ 31 रन चाहिए, 27 रन चाहिए। 40 बॉलों पर मज़र खेल रहे हैं 25 रन पर, तेज़ गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके लगाए हैं। फ़ाहद अंजुम 36 रन की बारी ले रहे हैं। फ़ाहद जब्बार, शुक्रिया राशिद। मज़र सामना करेंगे शाहिद इफ्तिकार का और इस बार फिर से आसानी के साथ ऑन साइड पे खेलते हुए 1 रन लिया है बल्लेबाजों ने। उस 1 रन के साथ 120 रन, 3 विकेट खोकर, और अब 26 रन दरकार हैं। 39 गेंदें बाकी हैं और एक आसान मैच होता जा रहा है बल्लेबाजों के लिए और ख़ासी हद तक फाइनल की दौड़ में जाते हुए यहाँ देखना पड़ेगा। इस बार घुटना टेकते हुए खेले हैं, डीप लॉन्ग लेग की तरफ, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, इस बार 2 रनों के लिए 4 रन बचाए हैं ये, शुक्रिया। यहाँ हम थोड़े से अनसाइडेड हैं बाउंड्री से। इफ्तिखार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, राउंड द विकेट। इस बार आगे गिरी इस गेंद को लिया है, बल्ले के बीचों बीच देखना पड़ेगा। लॉन्ग ऑफ के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। एम्पायर रशीद के दोनों हाथ फजा में बुलंद हुए 6 रनों के लिए। बड़ा दिल वाला शॉट कहना पड़ेगा फ़ाहद जब्बार का। जो ही गेंद को फ्लाइटेड गिरते थे ऑफ स्टंप पे, गेंद की पिच तक पहुंचे, गेंद पे झपटे जैसा कहना पड़ेगा, दिखा दिया है उसे 6 रनों का रास्ता। फ़ाहद जब्बार पहुंचे 44 रन पर 25 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 1 छक्के की मदद से फ़ाहद जब्बार का स्ट्राइक रेट 176 रन। अच्छी बारी ले रहे हैं फ़ाहद जब्बार और 71 रन की साझेदारी कर चुके हैं यहाँ चौथी विकेट की। इस साझेदारी से पूरी तरीके से मैच में लेके आ गए हैं। हालांकि 3 बड़े बल्लेबाज साथ छोड़ गए थे, पवेलियन में चले गए थे बल्लेबाजों पे बोझ डालते हुए, लेकिन यहाँ बड़ी समझदारी की बारी ली है इन दोनों बल्लेबाजों ने, फ़ाहद जब्बार और मज़हर हुसैन ने। और इस बीच एक और फाइन लेग पे 4 रन, एम्पायर का इशारा, और मैच आसान से आसान होता हुआ। और अब 18 रन चाहिए, 14 रन चाहिए। 36 बॉलों पे 14 रन दरकार हैं। बहुत ही आसान मैच है ये। अब 132 तकरीबन 14 रन की दूरी पर हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। दिल नहीं चाह रहा है इनका, आज ऐसे ही लग रहा है कि दिल नहीं चाह रहा है। आज से बेजार नहीं चला, अली नहीं चला। तारीफ़ करना पड़ेगी इन दोनों बल्लेबाजों की, फ़ाहद जब्बार और मज़हर हुसैन की, जिस तरीके से संभाला है अपने बल्लेबाजों को। एक वक्त पे खासी हद तक मैच में आ गए थे उमर इंटरप्राइजेस के गेंदबाज, लेकिन वहाँ हम देखना पड़ेगा कि अब खासी फील्डिंग में बहुत ही सुस्ती दिखाई फील्डरों ने भी। कई 4 रन मिस किए, जिससे कहना पड़ेगा बॉलर पे जो प्रेशर पड़ता है, अगर फील्डर उनका साथ ना दे तो बॉलर के लिए बड़ा एक दिक्कत वाली बात होती है। इस बीच एक और 4 रन, और इन 4 रनों के साथ मज़हर हुसैन पहुंचे 30 रन पर। गेंदबाज थे इमरान खान, जिनकी पहली गेंद पे 4 रन का रास्ता दिखाया है मज़हर ने, और इस बार पहले की निस्बत अच्छी गेंद, इस बार कमबैक किया था, धीरे से डाउन द विकेट खेले। ऑन साइड पे खेलते ही रन के लिए दौड़ पड़े, जब तक गेंदबाज अपनी गेंद पे जाके खुद ही फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। और अब
इमरान गेन करेंगे फहद जब्बार का, जो कि सिर्फ 2 रन की दूरी पर अपनी शानदार सेंचुरी से, और इस बार ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ, बिल्कुल कारपेट के सहारे 4 रनों के लिए इस बार, और इस 4 रनों के साथ अपने 50 रन भी मुकम्मल किए। और मैं आगे का जो भी बचा कुचा आंखों देखा हाल है वो उमर खान के हवाले करता हूँ, क्योंकि मैच तकरीबन पूरा ही हो गया, लेकिन कुछ वर्डिंग हमें चाहिए होगी उमर खान की मैच की फिनिशिंग के लिए, फिनिशिंग टच फॉर उमर खान। नाउ टेक ओवर टू उमर खान। Thank you, Mr. Mirza Kamar Beg. Total Energy lost their 3 wickets within the power play. What seemed like that Umar Enterprises will fight back was completely denied by Fahad Jabbar and the skipper of Total, Mazhar Hussain. Fahad Jabbar batting on 54 of 29 deliveries. He's at 5 fours and a 6. Mazhar Hussain batting on 31. And this partnership is currently 87 runs. That is more than 50% of the runs scored by these two batsmen. 44 ना 44 So now 144 for 3. They have 30 deliveries to score the remaining 2 runs. And Total Energy are just moments away to make it to the final. They had a wonderful journey, especially yesterday when they lost the game, and despite of losing the game, they made it to the finals on basis of the slightest of margins of run rate, and he's finished off with the boundaries of 4 runs to Fahad Jabbar, 59 not out of 31 deliveries. And Total has won the game by 7 wickets. They've made it to the finals. And tomorrow the final will be played between IMI Umar and KGA. We'll join you shortly for the match presentation.
कर गया ना सब, मुल्क ने डिफॉल्ट कर दिया, पैसे ही नहीं मिले। और कब होगा कैसे होगा हम देख रहे हैं। दफा इन चीज़ों को भी देख रहे हैं, हाँ जी, दफा इन चीज़ों को भी देख रहे हैं आप? नहीं, हमारा तो स्पॉन्सर एक आ रहा है, उसको चीफ गेस्ट बनाया। आपको पता है हमारा इधर नहीं इसको हेलो अमर भाई बात कर रहा हूँ। अमर भाई बात कर रहा हूँ। हेलो जी अमर भाई बात कर रहा हूँ। आसिफ भाई बात कर रहा हूँ। अगर तो ऊपर बैठने का आज काम बैंड चाहिए कि नहीं खराब है। सरफराज की तरह बहुत नुकसान हो रहा था। कौन सी वाली बिजली थी? ईद के बाद जाएगा ना, उसी 3,000 फीट तक कहा था उसका वो उसने शेख ने कहा था मुझे, तो हो सकता है उन्होंने उनमें से जाने से पहले करी होगी बात। हाँ तो कहना वो पूछ रहे थे कि वो रेडी फीट का क्या करेंगे। What is your name? The British तो
इसकी नहीं है यार ये आया कौन बंदा नहीं मैंने पहले दे रहा था तो मैं ये भी चला हफ्ता दे जाता हूँ ये बोला था कल शाम में बोला कल कल ही शाम तक मिल जाए ये आया भी दुकानों चले भाई हमारे पीछे एक साइन अबे कहाँ इतनी महंगी भाई गाली लिफाफा
क्या हो गया उमर? कुछ देर बैठे हुए तो बैठे हुए। बंदा आ गया। राशिद कहाँ है? राशिद क्या है? वो पर्चा देना यार, बनाने को बोला था उसको यार। हाँ वो चला गया राशिद, मैंने उसको दे दिया था फॉर्मेट। मुझे हाँ चला गया, इधर ही होगा यार। साथ ही आ जाएंगे। Both teams are requested to come forward for the match presentation. Omar Enterprises और टोटल एनर्जी के खिलाड़ियों से दरख्वास्त है प्रेजेंटेशन के लिए आगे आ जाएं। आज ये तो मेरे साथ ये बना हुआ है, ऑल डन, एसी लगा हुआ है, हमने बना पूरा बना दिया है, एवरीथिंग है, एंड दे वांट इमरजेंसी मीटिंग है, ये दे दिया एंटरटेनमेंट को प्रेजेंट शीशे बंद हो जाते हैं used to be a store कम खाना के लिए रमजान थोड़ा सही आ रहा है, थोड़ा सही आ रहा है।
और us? क्या हाल है? क्या हाल है, कैसे हो? रामज़ान खैरियत? आप ही कर रहे हैं? आ रहे हैं असल में? हम तो आते रहे, आप दिखे नहीं। मैं आज से अच्छा, आज से पहले हसन नहीं आ रहे? मैं नाज़ुम मैं नाज़ाबाद में चलते आप? मैं नाज़ुम फुटबॉल कर रहा हूँ। अच्छा, और बताएं, शान नहीं आ रहे हैं? स्पोर्ट्स अच्छा, खाया शान जो आपका? हाँ हाँ, वो भी आएंगे। हाँ। अरे Hello and welcome from the 35th Karachi GYMKHANA Omar Associates Ramazan Cricket Festival 2022, where the first semi-final was played between Omar Enterprises and Total Energy, and Total Energy won the game by 7 wickets with 4.5 overs to spare, and they're the first team to make it to the final, so congratulations to Total Energy. Let me introduce my huge presentation party for today. Our chief guest for the day is Ms. Amreen Sawawala, Vice President of Karachi GYMKHANA. We have with us Secretary of Cricket Karachi GYMKHANA, Mr. Jam Nafis. We have with us Mr. Qamar Iqbal, Patron-in-Chief of Total. We have with us Mr. Furqan Kidwai, CEO of Dawai.pk. We have with us Mr. Syed Kazim Rizvi. And we have with us Mr. Mehdi Ali Rizvi. So before announce the man of the match, but before announcing the man of the match, there is some special announcements by the cash award of rupees 2,000 for Yusuf Habib for brilliant performance by Total Energy, and I would request Mr. Qamar Iqbal to please present. Another special award for Mr. Umar Ahmed for his 4 wickets, brilliant performance, cash award of 2,000 by Total. I would request Mr. Syed Kazim Rizvi. And now the man of the match, Fahad Jabbar, 59 not out and 2 catches. And he has requested what a gesture, he wants to give his man of the match award to Umar Ahmed, and they'll share it. So cash award of rupees 5,000 from Perception and Toyota Central Motors, gift hamper from Dayfresh, free voucher of Angeti Restaurant and Candyland, 3-piece lady suit by Al Zuhaib, and 50% discount voucher from Anco. I would request. And now I'll invite the losing captain for today, captain of Omar Enterprises. If you can please come forward, have a few words with us. हमारे साथ 2 लफ्ज़ बात कर लें, फिर अवार्ड भी आपका. पहले तो जी ब्रिलियंट क्रिकेट थ्रू आउट अनबीटन रहे, लेकिन आज नॉकआउट की क्या गलती हुई आज? असल में तकरीबन 4 दिन लगातार नाइट खेलने, फाइनल सेमीफाइनल, तो लड़के आज बिल्कुल स्टक हो गए, नहीं खेल पाए आज. सामने टीम अच्छा खेली, जीत गया. ओवरऑल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, किस तरह का रहा ये टूर्नामेंट? असल में हमेशा से कराची जिमखाना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती रही है और इस बार भी उन्होंने रिवायत कायम रखी, और मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मौका दिया यहाँ खेलने का. चलें, आप अपना अवार्ड ले सकते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट चीफ गेस्ट फॉर टुडे मिस अमरीन तववाला to please
hand over the award of cash rupees 25,000 to the semi-finalist, captain of Omar Enterprises. And now I would request the fees to please present souvenir to our chief guest, Ms. Amreen Tawawala. And we have another souvenir. I would request Mr. Masoor Mirza to please present it to Mr. Furan Kidwai. And meanwhile, we're waiting. I'll also tell you that tomorrow, the second semi-final will be played between IMI Umar and KGA Club. Total Energy has made it to the finals. We have a cracker of a game tomorrow as well. And this tournament has been wonderful. We've seen some brilliant records. And I would like to invite Fahad Jabbar, if you can please come forward. Fahad Jabbar. मजर भाई आप भी आ जाए, जरा विनिंग कैप्टन से तो बात करें. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस और बड़ा सर सफर से आप आए. कल 2 बॉलों के फर्क से आज आप फाइनल में आ गए. बिल्कुल ऐसा ही है. तो क्या कहना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एनर्जी भी की ना? नहीं, हमारी बॉडी लैंग्वेज तो पहले मैच से जैसा आप देख रहे हैं बहुत अच्छी है. बल्कि मैं कहूँगा कि हम लोग अच्छा खेलें, क्योंकि हमारा ये 5वां मैच था 7 दिनों में कंटिन्यूस, एक दिन का खाली गैप था. तो कीपिंग इन माइंड एज आपके लिए स्पेशल अवार्ड होना चाहिए. कॉन्ग्रेचुलेशन. Thank you so much and all of it. Okay, now I would request Mr. Jam Nafis to please present a souvenir to Mr. Mehdi Ali Rizvi. And we've also been joined by Mr. Hassan Umar, so I would request Mr. Jam Nafis to please present souvenir to Mr. Hassan Umar as well. So that's all for today. Thank you so much to the presentation party for joining us. It was a wonderful match. We'll see you tomorrow with the second semi-final played between IMI Umar and KGA